हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाउ डज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। फिर हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को मिस मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी बजा दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाउ डज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स? द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स take place through nervous system and hormonal system that is called endocrine system. Endocrine glands secrete hormones. Hormones are a kind of chemical messengers. Hormones are chemical substances which act on specific sites. These hormones coordinate the activities of human beings and also their growth. As you know that there are 5 sense organs in our body, that is eyes, ears, nose, tongue and skin. We receive a variety of information from the environment around us through the sense organs. जो हमारे आसपास हो रहा है उसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सेंस ऑर्गन के अंदर रिसेप्टर होते हैं which are sensitive to particular type of stimulus such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. The different sense organs contain receptors for detecting different stimuli. Photoreceptors are present in the eyes. They detect the light. Phonoreceptors present in the ears detect the sound. Gustatory receptors are present in tongue. They detect the taste. Thermoreceptors are present in the skin. ये गर्मी और सर्दी को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या हम अगर कुछ सोच रहे हैं, कैसे हम किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर इंटरप्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करते हैं। द नर्वस सिस्टम ऑल्सो पासेस इंफॉर्मेशन को पास करता है फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। द रिलीज ऑफ सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। नर्वस सिस्टम स्पेशल सेल से बना होता है जिसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स इज़ द लार्जेस्ट सेल, ये सबसे बड़ा सेल होता है हमारी बॉडी में, विच लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर। इसका मेन काम होता है मैसेजेस को कैरी करना। इट कैरीज मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और नर्व इम्पल्सेस। जैसे किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, सिमिलरली the neurons carry messages in the form of electrical signals. Structure of neuron: dendrites, cell body, axon, nerve endings. The cell body of neuron contains cytoplasm and nucleus. A number of long and thin fibers are stretching out from the cell body of a neuron. As you can see in the figure, they are nerve fibers. The shorter fibers on the body of neuron are called dendrites. The longest fiber on the cell body of a neuron is called axon. The axon has an insulating and protective sheet cover of myelin around it. The myelin is made up of fat and protein. The message transfers from one neuron to another neuron. How does nervous system works? When the sense organ like eyes, ears, tongue, nose, skin in our body is affected, it sends the messages to the brain in the form of electrical impulses through the sensory neuron. The brain analyzes this message and decides the action to be taken. The brain sends out instructions to the muscles of the concerned part called the motor neurons. The concerned body part then acts according to the instructions sent by the brain. The nervous system is divided into two main parts, that is central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system consists of the nerves of the body like cranial nerves, spinal nerves and visceral nerves. All this we will study in detail in a separate video. The peripheral nervous system can further be divided into voluntary nervous system, which is under the voluntary control from the brain, and autonomic nervous system, which operates automatically or involuntary. Next we will study an important topic, that is reflex action. What do you mean by reflex?
Reflex is a word which we use commonly when we talk about certain action. For example, जब हम किसी गर्म प्लेट को टच कर लेते हैं, किसी गर्म बर्तन को टच करते हैं, तो हम जल्दी से अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं. So the hot plate is a stimulus. So when we touch a hot plate, the receptor senses. The stimulus here is the heat, which we feel in our hand on touching the hot plate. This heat is sensed by the heat receptor, that is called thermoreceptor, in our hand. The receptor triggers an impulse in the sensory neuron which transmits the message to the spinal cord. The impulse is passed on to the relay neuron, which in turn passes it to the motor neuron. The motor neuron passes the impulse to the muscle in our arm. The muscle then contracts and pulls our hand away from the hot plate. Next, we will study about human brain. Brain is the highest coordinating center in our body. The brain is located inside the skull of our body at the top of the spinal cord. It is protected by a bony box in the skull called cranium. The brain is surrounded by three membranes called meninges, which helps to protect it. The space between the membranes is filled with cerebrospinal fluid, which protects the brain from mechanical shocks. The brain is broadly divided into three regions: forebrain, midbrain, and hindbrain. The forebrain consists mainly of cerebrum. The midbrain does not have any further divisions. The hindbrain consists of three centers called pons, cerebellum, and medulla. Now we will discuss them one by one in detail. Forebrain is the most complex or the specialized part of the brain. As you can see in the diagram, the main function of the forebrain are it is a main thinking part of the brain. ये सभी voluntary action को control करता है, information को store करता है हमारी memory के अंदर. Next is midbrain. It controls the involuntary actions taking place in our body. It connects the forebrain with the hindbrain. It is associated with vision, hearing, motor control, sleep or walk, and temperature regulation. Last is hindbrain. It has three main parts, that is cerebellum, medulla, and pons. Cerebellum ये हमारे posture को control करता है और body के balance को बनाए रखता है. Medulla controls the involuntary actions, for example blood pressure, salivation, vomiting. Next is pons. Pons voluntary actions को control करता है and it helps in the regulation of respiration. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. If you still have any doubt, you can ask in the comment box. Thank you.